Assalamu alaikum dear students. Class 7th, subject history, dated 21st of August 2020. Topic tribes, nomads and settled communities. There are there in chapter number 2, 3 and 4 we saw how kingdoms rise and fall. Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. Over the century, important political, social and economic development had taken place, but social change was not the same everywhere because the different kinds of societies involved differently. It is important to understand how and why this happened. In large parts of subcontinent, society has already divided according to the rules of Varna. These rules, as prescribed by the Brahmanas, were accepted by the rulers of large kingdom. The difference between the high and low and between the rich and poor increased under the Delhi Sultanate and the Mughals. This hierarchy between social and class grew further. Behind big cities tribal society there were however other kinds of society दूसरी काइंड किस्म की सोसाइटी भी एज वेल मैनी सोसाइटी इन द सब कंटिनेंट बहुत सारी सब कंटिनेंट में जो बहुत सारी सोसाइटीज़ थी डिड नॉट फॉलो द रूल्स एंड रिचुअल्स वो रिचुअल्स और रूल्स फॉलो नहीं करते थे जो प्रिस्क्राइब की हुई थी ब्रह्मनाज की नॉर वायर दे वर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस इक्वल क्लासेस अनइक्वल क्लासेस वो बहुत सारी क्लास में बटे हुए थे सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स इन सोसाइटीज़ को ट्राइब्स कहते हैं मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बाउंड होते हैं ये कौमियत की बुनियाद पर बाउंड होते हैं ये मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर उन्हें लाइवलीहुड जो होता है वो एग्रीकल्चर से ऑब्टेन किया होता है अदर्स आर हंटर गैदर्स हर्डर्स मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल सोर्स ऑफ द एरिया इन विच दे लिव ठीक है ना सम ट्राइब्स वायर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अदर सोसाइटीज होती हैं नोमैडिक पीपल जो from one place to another place in search of food and shelter. A tribal group controlled land and pasture jointly. ठीक है ना and divided these among us household according to its own rules. Many large tribal third in different parts of the subcontinent. They usually lived in forests. जंगलों में रहते हैं hills, deserts and places difficult to reach. Sometimes they crushed the more powerful caste-based society in various ways to tribal retain their freedom and prescribe their special culture. But the caste-based and tribal societies also depend on each other for their desired needs. This relationship of conflict and dependence gradually caused both society to change. Thanks.